Hi everyone. We are going to discuss about modals today. What are modals? Modals are auxiliary verbs that express ability, possibility, permission, and necessity. So whenever we use modals, we have replaced some unwanted words to one word. First thing. Second thing, modals are never plural. We cannot add ses after it. And the third very common rule is right after modals, we will be having verb first form, can speak, can talk, could walk, and so on. All right. Moving on forward, let's understand few of them and their example sentences. All right. Starting with can. As we know, can is used sometimes for showing possibility, sometimes for ability, and sometimes for permission. Let me give you some examples so that you can understand it more nicely. She can speak Spanish. Ability. Can I go outside? Permission. Possibility. Can she help me today in my work? Possibility. We're not sure she's gonna help us or not, but it's just like हम बोल रहे हैं कि क्या वो हमें हेल्प कर सकती है. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, कुड. पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी. कोई एक्टिविटी जो हमने पास्ट में की है या हमारी एबिलिटी हो पास्ट में किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है या कोई पॉसिबिलिटी. कुड is normally used in a very formal way. She could dance. I could swim when I was 5. Could you help me? May. Again, a formal modal, normally used to ask for permission or possibility. May I use your phone? May I know where are you from? Possibility. It may rain today. हो सकता है बरसात आए. We're not sure. Possibility. Might. वीक पॉसिबिलिटी. अब इसे वीक पॉसिबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कई बार श्योर नहीं होते किसी सिचुएशन. इट माइट रेन टुडे एज द वेदर इज वेरी डार्क. और he might come late. I'm not sure about certain situation. So we call it, that's why weak possibility. इसलिए हम कहते हैं ये एक weak possibility है. Shall. Normally shall आजकल rarely यूज होता है. फॉर्मल है और यूके इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है. आई शिल रिटर्न योर फाइल. आई शिल ब्रिंग बैक योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर गोइंग थ्रू एंड सो ऑन. नाउ कम शुड. गिविंग समवन एन एडवाइस. किसी को एडवाइस देनी हो. यू शुड डू एक्सरसाइज. यू शुड डू सम योगा टू स्ट्रेंथन अप योर बोन्स. ऐसे अलग अलग एडवाइस हम दे सकते हैं इसमें. नाउ कम विल. नॉर्मली हमें जब फ्यूचर फोकस करना है या किसी को प्रॉमिस करना है या हम खुद एक प्रॉमिस कर रहे हैं कोई. मैं अगले हफ्ते से वॉक पे जाऊंगी. आई विल गो फॉर अ वॉक फ्रॉम नेक्स्ट वीक. एक प्रॉमिस कर रही हूँ अपने आप को. फ्यूचर फोकस कर रही हूँ. शी विल जॉइन ड्राइंग क्लासेस. शील जॉइन योगा क्लासेस. एक और फ्यूचर फोकस्ट. शी विल विजिट योर हाउस ड्यूरिंग वेकेशन. वो विजिट करेगी किसी के हाउस वेकेशन में या वो विजिट करेंगे वेकेशन में. ऑल राइट. नाउ कम्स वुड. पोलाइट रिक्वेस्ट एंड हाइपोथेटिकल. पोलाइट रिक्वेस्ट तो ठीक है. हाइपोथेटिकल क्या है? हाइपोथेटिकल ये है एक मतलब ऐसा होता तो ऐसा सही होता उसके लिए. समथिंग लाइक दैट. Okay, so if this has happened, then this might not have happened.
Something like this when we are trying to explain this kind of things. Polite request, would you pass me my file? Hypothetical. She could have passed exam if she had worked hard. She would have won the race if she has practiced before it. Hypothetical, जो हुआ ही नहीं है, बस हम बोल रहे हैं कि हो सकता था अगर वो ऐसे करती तो ऐसा हो जाता. Okay. Must. Strong necessity and sometimes even obligation. You must wear a seat belt before you start driving. You must talk in a polite way. You must follow the university rules and so on. तब हम must use करते हैं. Ought to. Moral duty. You ought to. करना ही पड़ेगा. You ought to complete your task as tomorrow is the last day of submission. We ought to respect our seniors. Have to. Now, when I talk about have to, it shows obligation normally. I have to complete work for tomorrow meeting. Obligation. I have to complete my homework as teacher want to see it. Used to. कोई भी एक एक्टिविटी जो पास्ट में करते थे बट अब नहीं करते हैं. I used to play chess. I used to drive fast when I was in my teen. I hope you understood the whole thing. If you have any doubt, feel free to text me on the comment box. कोई भी doubt हो पूछिएगा and I'll come up more with such kind of videos. Do like and subscribe to my channel.